Hello students, once again you all are welcome in our Sanskrit class. Today we are going to study our chapter number 2, which is the story named Kulasya Acharaha. Kulasya means of family, Acharaha means tradition. So Kulasya Acharaha means family tradition. Students, in this story, we will learn how one should follow and protect his family tradition. चैप्टर का ट्रांसलेशन देखने से पहले आइए शॉर्ट में इसकी कहानी देखते हैं। एक बार एक चातक फैमिली, जिनका की फैमिली ट्रेडिशन होता है सिर्फ बारिश का पानी पीना, उसने एक बेबी चातक को बहुत जोर से प्यास लगती है और वो अपनी मदर के पास जाकर कहता है कि अब वो अपनी प्यास सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो तालाब का पानी पीने जा रहा है। मदर उसे समझाते हुए कहती हैं कि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन नहीं है, हम सबको अपना फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। पर बेबी चातक कहता है कि अब वो प्यास सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो तालाब का पानी पीने जा रहा है। और माँ की बात अनसुनी करके जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो थकने के बाद एक घर के पास रुकता है। उस घर में एक किसान जो कि मरणासन अवस्था में है, उसके पास बैठा हुआ बेटा उससे कहता है, पिताजी आज रास्ते में मुझे एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला, उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया कि इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। किंतु तभी मुझे आपकी बात याद आ गई कि किसी दूसरे का पैसा बिना पूछे लेना हमारा फैमिली ट्रेडिशन नहीं है, इसलिए मैंने वो थैला वहीं पर छोड़ दिया और घर आ गया। उसकी बात सुनकर पिता बहुत प्रसन्न हुए। जब बेबी चातक ने ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं तो अपना फैमिली ट्रेडिशन तोड़ने जा रहा था और अब से मैं भी अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करूंगा। ऐसा सोचकर वो अपने घर की ओर वापस आ गया और माता के पास जाकर बोला कि मदर, आज से मैं आपकी बात मानूंगा और अपने फैमिली ट्रेडिशन को हमेशा फॉलो करूंगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी को अपने परिवार की परंपराओं का पालन पूर्णतः करना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन। कः चातकः शिशुः आसीत्। देयर वाज अ बेबी चातक। सः एकदा तृषया पीडितः जनन्या समीपं व्रजति वदति च। Once, being thirsty, he goes to mother and says, Amb, trasha mam pidiyati. Mother, I am thirsty. Aham jalam patum ichchami. I want to drink water. Samprati megha jalam na milati. Now the water of cloud is not available. Atah tadak jalam patum ichchami. So I want to drink the water of the lake only. Janani vadati. Mother says, Bal, vayam tu meghajalam ev pivama. Child, but we drink only the water of clouds. Esha asmakam kulasya acharaha. This is our family tradition. Atah tvam tadak jalam patum na shaknoshi iti. So that you can not drink the water of lake. Chatak Shishu Kathayati. The baby Chatak says, Mahati me trasha. Mother, I am very thirsty. Adhuna akashe meghan na pashyami. Now I don't see the clouds in the sky. Kada megha varshasi. Kada cha aham meghajalam patum shaknomi. I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of cloud. Atah trashaya pidito aham tadag jalam patum gacchami. So, being thirsty, I am going to lake to drink its water. Janani punarapi shishum bodhayati. Bal na ayam asmakam kulacharah. Mother again advises the baby chatak, child,
This is not our family tradition. Kulacharah sadev rakshitavya ev. The family tradition should be protected. So, you are not able to drink the water of lake. तशया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वम्. The thirst, and you should bear the thirst and wait for the cloud to shower. जनन्या कथनम् अश्रुत्वा चातक शिशु तडाग जलम पातुम तडागम गंतुम निर्गच्छति. Without listening the advice of mother, the baby chatak exits to go the lake to drink the lake water. मार्गे परिश्रांत सः यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयो वार्तालापं शृणोति. On the way, when being tired, he stands near a farmer's house. He listens the conversation of the father and the son. कृषका वृद्ध मरणासन्न च आसीत्. The farmer was old and was about to die. तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्र तस्मै कृषकाय कथयति. His son, who was standing near him, says the father, तात अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः. Father, today on the way I found the bag of money. तस्य दर्शनात् आनन्दः जातः. Seeing that I was happy. तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणाय अहं हस्तं प्रसारयम्. Thinking that my poverty will end by it, I reached out my hand, but immediately I remembered your advice. अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलाचारः न इति. It is not our family tradition to take the money of others. अतः अहं धनस्यूत तत्रैव अत्यज्यम्. So I left the bag of money there itself. चातक शिशु सर्वं शृणोति. The baby chatak listens it all. सः विचारयति. He thinks, अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचार्यं पालितुं कीदृशी श्रद्धा. Oh, how great is the faith of the old man on his deathbed and his son to follow the family tradition. Aham tu kulacharam na palayami, but I am not following our family tradition. Vayam मेघजलम एव पिबामा इति अस्माकं कुलाचारः. It is our family tradition that we drink only cloud water. Tam aham tyaktum pravartate. I was about to give it up. Etat anuchitam asti. This is not proper. Sah चिन्तयति. पश्वः प्राणिश्चैव मानवाश्च सदाश्रयः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलात्मनः. He thinks animals, birds and human beings maintain their own family tradition. I will also take care of my family and its traditions. एवं विचिन्त्य सा मातरं प्रत्यागच्छति. सर्वे वृत्तान्तं च कथयति. Thus thinking, he returns to his mother and tells everything to her. माता संतोषम् अनुभवति. शिशुवे च आशीर्वादं ददाति. Mother feels satisfied and gives blessing to him. अल्पे एव काले मेघवृष्टि भवति. In a short time only the clouds shower rain. मेघजलं पीत्वा चातक शिशो दृशा शाम्यति. The thirst of baby chatak
is satisfied by drinking rainwater. This is all about the translation. Students, I hope this will help you to understand this chapter and the story as well. Do write the exercises given in the textbook in your fair notebook. Thank you.